16th ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रिजम्पशंस आर देयर एज क्लासिफाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट? परमिसिव प्रिजम्पशंस और प्रिजम्पशंस ऑफ फैक्ट्स, yes. Compelling presumptions or presumptions of law, that is rebuttable presumptions, yes. Irrebuttable presumptions of law और conclusive presumptions, ये भी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। What is the leading decision in the case of Menka Gandhi versus Union of India? Leading decision था right of hearing, correct, option number A. Next, Advocates Act 1962 came into force on 19th May 1961, option number A. Next, harboring an offender who has escaped from custody or whose apprehension has been ordered, if the offence be capital, is dealt under which section of IPC? Correct answer is option number B, section 216 of IPC. नेक्स्ट फर्दर के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। द मैक्सिम एक्टस नन फेसिट रेम नेसी मीन्स सेट्रिया मीन्स, इसका मीनिंग होता है देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट अ गिल्टी माइंड, मतलब अगर गिल्टी माइंड है तभी कहा जाएगा कि क्राइम हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, law laid down under section 73 of Indian Contract Act 1872 is related to which of the following cases? ये related है हेडली वर्सेस बैक्सेंडल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, क्वेश्चन नंबर 7। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डैश क्या डैश है, डज नॉट परमिट क्या है accordingly, petition in which a decree of restitution of conjugal rights has been passed to apply it to the court for a decree for divorce by showing that there has been no restitution of conjugal rights as between parties of marriage for a period of 1 year or upwards after passing of the decree, does permit any party to that, option number C हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। The offences under the Prohibition of Child Marriage Act 2006 are किस कैटेगरी का होता है? ये कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। In case of land acquisition by the central government for public-private partnership projects, consent of how many affected families is maintained by the LARR Act? Correct answer is 70%, option number B. Next, a company which is not a domestic company will pay income tax at the rate of how many percentage? At the rate of 40%, option number C. Next, question number 11. As per section 53 of IPC, the word injury denotes any harm whatever illegally caused to any person's body, mind, reputation. तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, under which of the following cases can be cured under section 465 of the Code of Criminal Procedure 1973? Entertaining of complaint without complying with section 195 and 340 of the CRPC? No. The reading and recording of the evidence taken in one case into another companion case? Yes, option number B correct answer है। Next, question number 13. Which of the following statements hold true for de novo trials? De novo trial के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए, omission or illegality in the procedure even if it does not affect the core of the case can become a ground for calling de novo trials. Wrong. A de novo trial should be the last resort. Correct answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। Protection against arrest and detention in certain cases is mentioned in which of the following articles of Indian Constitution? ये mentioned है आर्टिकल 22, ऑप्शन नंबर सी। 15, क्वेश्चन नंबर 15।
Article 300A of Indian Constitution, that is a right to property, has been inserted in Constitution by which amendment? Right to property Article 300A इंसर्ट किया गया था by 44th Amendment Act. Option number A. Next, which of the following sections of the Muslim Personal Law Shariat Application Act 1937 have been repealed, amended by Section 6 of the Dissolution of Muslim Marriage Act 1939? Correct answer is Section 5, option number B. Next, question number 17. A railway servant was killed in a bus accident during the course of employment. His family members may claim compensation under, किसके अंडर में compensation claim किया जा सकता है? Motor Vehicle Act, yes. Employees Compensation Act 1923, yes. तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आइदर दिस आइदर दैट, तो ऑप्शन डी हो जाएगा. बोथ नहीं होगा क्योंकि किसी एक एक्ट के अंदर अंतर्गत में ही कंपनसेशन मिल सकता है, दोनों के में नहीं मिल सकता है एक साथ में. तो आइदर ए और आइदर बी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट, कास्टिंग काउच इन बॉलीवुड द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एग्जाम्पल है सेक्सुअल हरासमेंट का, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19. Promissory estoppel against government agencies is decided in which case? Paurnami All Mills versus State of Kerala. Option number C. Next, question number 20. Frustration of contract is provided by which section of the Indian Contract Act? Frustration of contract, section 56. Option number D. Schedule 2 of the Employees Compensation Act 1923 deals with list of persons who are included in the definition of employee. Option number B. Next, reference to the arbitration is provided in which section of the Arbitration and Conciliation Act 1996? Arbitration में जाना है, ये किस सेक्शन, कौन सा सेक्शन प्रोवाइड करता है? ये सेक्शन 8 प्रोवाइड करता है, ऑप्शन नंबर बी. Question number 23. Under the head subsequent conduct, which of the following type of conduct would be material? Change of life, yes. Evasion of justice, yes. Fear, trembling, yes. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, all of them. Next, a plaint has to be presented to the court under order 4 rule 1 in how many copies? Single, duplicate, triplicate, no fixed rule. तो करेक्ट आंसर है डुप्लीकेट, ऑप्शन नंबर बी, यानी डबल करना है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25. ओमिशन टू गिव नोटिस अंडर ऑर्डर 21 रूल 22 विल रेंडर द एग्जीक्यूशन नल एंड वॉइड. ऑप्शन नंबर ए. फर्दर, क्वेश्चन नंबर 26. Where a decree is passed against the union of a state or a state for the act done in the official capacity of the person concerned under section 82 CPC, execution shall not be issued on any such decree unless the decree remains satisfied for a period of, कितने पीरियड के लिए अनसेटिस्फाइड होना चाहिए? 3 months from the date of decree. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27. Freedom of residence under Article 19 of the Constitution of India is available in which of the following clauses? किस क्लॉज में फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस? ये है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई में, ऑप्शन नंबर ए. अंडर विच सेक्शन ऑफ द एविडेंस एक्ट एडमिशंस आर डिफाइंड? एडमिशन किस सेक्शन में डिफाइंड है? एडमिशन डिफाइंड है सेक्शन 17 ऑफ एविडेंस एक्ट 1872 में, सेक्शन 17. तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29. In which of the following cases the Supreme Court has held that the investigating officer should be allowed to refer to the records of investigation? State of Karnataka versus Yarappa Reddy. Option number A. Recovery of a specific immovable property may be obtained by CPC within what period? Within 6 months. Option number B. Next, 31. Question number 31.
Who appoints the commissioner for rehabilitation and resettlement under the LARR एक्ट? तो करेक्ट आंसर है अपॉइंट करने का पावर स्टेट गवर्नमेंट का है, ऑप्शन नंबर डी, स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, इफ a party who obtained an order for leave to amend pleading does not amend the same within how many days, he shall not be permitted to do that without the leave of the court? Correct answer is 14 days, option number B. Next, question number 33. Punishment of advocates for misconduct has been given under which section of the Advocates Act 1961? तो ये mentioned है under section 35, option number C. Next, question number 34. Under which section of IPC professional negligence is often invoked against medical professionals in cases alleging professional negligence? तो ये है section 304A, option number B. Next, A offers a bribe to be a public servant as a reward for showing A some favor in the exercise of B's official functions. B accepts the bribe. तो A has abated the offense किस सेक्शन के तहत में अबेटमेंट हुआ है? तो ये हुआ है आईपीसी के सेक्शन 161 के तहत में ए हैज़ अबेटेड द ऑफेंस डिफाइंड सेक्शन 161 आईपीसी। हालांकि ये रिपील हो चुका है, लेकिन फिर भी हमें लग रहा है ये क्वेश्चन कहीं पुराने पीवाईक्यू से उठाकर यहाँ पे कॉपी कर लिया गया है, इसीलिए 1988 के तहत में अब रिपील होने के बावजूद भी ये क्वेश्चन पूछा गया है इतने सालों बाद भी। हाउएवर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 35, क्वेश्चन नंबर 36. Where perpetual injunction may be granted? Perpetual injunction कब grant किया जा सकता है? Where the defendant is trustee of the property for the plaintiff? Yes. Where there is no standard for ascertaining the actual damage? Yes. Compensation is in money would not afford adequate relief. तो सब सही है, तो correct answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, all of the above. नेक्स्ट, अ कंपनी विशेस टू इंश्योर दैट नो वन एल्स कैन यूज देयर लोगो, तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे ट्रेडमार्क कहा जाएगा। नेक्स्ट, द सेक्शन ऑफ द आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट डीलिंग विद द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग, कब आर्बिट्रल प्रोसीडिंग कमेंस होगा, स्टार्ट होगा, ये कौन सा सेक्शन बताता है? ये बताता है सेक्शन 21, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 39. Amount of deduction under section 24 of the Income Tax Act from annual value is कितना है? ये है 30%, यानी 3/10, ऑप्शन नंबर सी, 3/10 of annual value. Next, question number 14. The test of reasonableness is not wholly dash test and its contours are fairly indicated by कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये हो जाएगा सब्जेक्टिव, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 41. द पावर टू इनैक्ट अ लॉ रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इज लेफ्ट टू इनैक्ट। सिटीजनशिप के रिगार्डिंग में पावर किसके पास दिया गया है? तो ये पावर दिया गया है पार्लियामेंट के पास, तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 11। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 11 के तहत में पार्लियामेंट के पास पावर है कि सिटीजनशिप के रिगार्डिंग में कोई भी चेंजेस कर सकता है। कौन कर सकता है? पार्लियामेंट। नेक्स्ट, द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू रेलवे एम्प्लॉयज बाय द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंजरी बाय एक्सीडेंट इज गवर्न बाय विच एक्ट? द एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43. The minimum amount of compensation payable under Employees Compensation Act 1923 in case of total permanent disablement of a railway servant due to accident is rupees, कितना रुपीज़ है? ये है rupees 1,40,000, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, the bond under section 109 CRPC as security for good behavior from suspected person can be executed for a period not exceeding 1 year, option number C. 45. Question number 45. The maximum limit of rupees 5,000 that could be paid to the wife as maintenance
अंडर सेक्शन 125 ऑफ द CRPC 1973 was removed in which year? किस साल में रिमूव हुआ था? ये रिमूव हुआ था 2001 में, ऑप्शन नंबर सी। द टर्म WIPO, WIPO स्टैंड्स फॉर WIPO का फुल फॉर्म क्या होता है? WIPO मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10 ऑफ CPC आर। CPC का प्रोविजन क्या है? ये है CPC का प्रोविजन डायरेक्टरी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा इज कंटेन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन? CPC के सेक्शन 11 के किस एक्सप्लेनेशन में है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा? कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा है ये एक्सप्लेनेशन 4 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 49, the famous pronouncement of Delhi High Court regarding constitutional validity of Section 377 Indian Penal Code reversed by Supreme Court, in which case ये रिवर्स किया गया था सुरेश कौशल वर्सेस नास फाउंडेशन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 who shall record the information of rape by being given by a rape victim? रेप विक्टिम है तो उसका इन्फॉर्मेशन किसके द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा? ये रिकॉर्ड किया जाएगा ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, तो नो। डिप्यूटी एस सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, नो। ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, किसी महिला का होना ज़रूरी है, तो ऑफिसर वुमेन पुलिस ऑफिसर और एनी वुमेन ऑफिसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51, अंडर द प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, चूज करना है करेक्ट आंसर। CRPC के तहत में समन्स कैन बी ओरल, रॉन्ग, समन ओरल नहीं हो सकता है। समन्स कैन नॉट बी सर्व्ड ऑन कॉर्पोरेट एंटिटीज, ये भी रॉन्ग है। कॉर्पोरेट बॉडीज पर भी समन्स सर्व किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी, समन्स आर आइदर फॉर अपीयरेंस और फॉर प्रोड्यूसिंग अ डॉक्यूमेंट थिंग, ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, every person who is a member or a defense service or hold any civil post under the union holds office during the pleasure of the president, ऑप्शन नंबर बी। 52 का बी हो जाएगा। उसके बाद 53, क्वेश्चन नंबर 53, एन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग इज, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग का नेचर क्या होता है? जुडिशियल प्रोसीडिंग, तो नो, ये जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर CPC और एविडेंस एक्ट के प्रोसीजर को फॉलो करना कोई ज़रूरी नहीं है। क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग, तो यस, ये क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग होता है। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग क्वासी जुडिशियल होता है। क्वासी जुडिशियल मतलब जुडिशियल होता है लेकिन एग्जैक्टली जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होता है, उसमें जुडिशियल प्रोसीडिंग का कुछ कुछ उसमें झलक दिखता है, लेकिन एग्जैक्टली जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज एड हॉक आर्बिट्रेशन? एड हॉक आर्बिट्रेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसीडिंग एडमिनिस्ट्रेड बाय द पार्टीज themselves with the rules created solely for that specific case. Yes, parties make their own arrangement with respect to all aspects of the arbitration, including the laws and the rules. Yes, the seat of arbitration, the language and the scope and issues to be resolved by means of arbitration. Yes, तो correct answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, A, B, C. Next question number 55, which of the following sections of the civil procedure code define the mean profit? mean profit किस सेक्शन में डिफाइंड है? तो ये है सेक्शन 2 सबसेक्शन नहीं, सेक्शन 2 क्लॉज 12, इसको क्लॉज पढ़ाया जाएगा, 2-12 में है, सेक्शन 2 क्लॉज 12, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, on which of the following dates did Hindu Marriage Act 1955 come into operation? हिंदू मैरिज एक्ट लागू में कब आया? ये आया मई में, 18 मई 1955, ऑप्शन नंबर ए। Which of the following properties will section 30 of Hindu Succession Act 1956 govern? किसको ये गवर्न करेगा? तो ये गवर्न करेगा तरवद, यस, तवाजी, यस, कुटुम्बा, नो,
कवारू नो, इलोम नो। तो 1 और 2 वाला कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। An advocate is under an obligation to uphold the rule of law and ensure that the public justice system is enabled to function at its full potential. Any violation of the principle of professional ethic by an advocate is unfortunate and unacceptable. Ignoring even a minor violation misconduct militates against the fundamental foundation of the public justice system. It was said in which case? ये कहा गया था इन द केस ऑफ ओपी शर्मा वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा 2011। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कंटेन्स प्रोविजन रिलेटिंग टू। सेक्शन 8 किस चीज से रिगार्डिंग प्रोविजन है? फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विथ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स एटसेट्रा। ऑप्शन नंबर बी। Next, question number 60. The verification of the registered office shall be furnished to the registrar within a period of how many days? Within a period of 30 days of incorporation of the company. Option number A. Next, question number 61. Cyber law deals with what? All activities concerning the internet. IPR, yes. E-commerce, yes. तो option number D हो जाएगा all of the above. अब question number 62. According to Section 2 of Motor Vehicles Act 1988, the term motor cab means any motor vehicle constructed or adopted to carry not more than 6 passengers or excluding the driver. 6 passengers excluding the driver. Option number D हो जाएगा. Next, question number 63. The National Commission of Consumer Protection is composed of how many members? Composed of 5 members. Option number B. Next, question number 64. Which of the following statement is are false? False statement को ढूंढना है for the purpose of the Hindu Marriage Act 1955. False statement कौन सा है? It is assumed that a person who is not Muslim, Santhal, Christian, Jew or Parsi by religion is Hindu. तो ये correct है. A person who belongs to Lingayat subsect is assumed to be Hindu. ये भी correct है. A person who converted to another religion needs to follow local ritual custom for converting back to Hinduism. तो ये false है. तो correct answer हो जाएगा option number C, 3 only. हमारा false statement को ढूंढना है तो option number C हो जाएगा. Next, question number 65. Provision for settlement of dispute outside court has been provided under which section of Civil Procedure Code? तो ये provided है under section 89 हो जाएगा. Option number B correct answer. Next, the Indian Evidence Act came into force on, ये force में आया 1 September 1872. Option number D. उसके बाद question number 67. According to the provisions of Article 315 of the Indian Constitution, there shall be a Public Service Commission for the Union and a Public Service Commission for each state. Correct है? क्या find करना है? Correct statement ही find करना है. The Public Service Commission for the Union, if requested to do by the Governor of a state, may, with the approval of the President, agree to serve all or any of the needs of the state. ये भी correct है. तो option number C हमारा correct हो जाएगा 1 and 2. Next, question number 68. Which of the following sections of the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 deals with amount of maintenance? ये deal करता है section 23. Option number C. Next, in which of the following case the Supreme Court first of all made an attempt to look into the question regarding the extension of the right to life to the right to health and other hygienic conditions? ये ऑब्जर्व हुआ था इन द केस ऑफ रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 70. बेसल कन्वेंशन इज एसोसिएटेड विथ वन ऑफ द फॉलोइंग. किससे ये संबंधित है? इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, नो. क्लाइमेट चेंज, नो. प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, नो. क्या पूछा है? बेसल कन्वेंशन. तो बेसल कन्वेंशन इज रिलेटेड टू
द कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ हजारस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, साइबर क्राइम का नेचर कैसा है? साइबर क्राइम इज intangible in nature। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, health and education cess is applicable to all excesses। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी अराइजेस वेयर। कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी कब अराइज होता है? वेयर देर इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ओनली। नो, देर इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। इंटेंशन बहुत ज़रूरी होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इज बेस्ड ऑन द डिसीजन। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी किस केस में आया? तो ये आया वायलेंस वर्सेस फ्लेचर। ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, द रूल ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी वॉज लेट डाउन इन। रूल ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी किस केस में आया? डेविस वर्सेस मान। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, in which of the following cases was it held that the rights conferred under Section 25 of the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 supersedes any contract to the contrary? The fact that the date of decree makes no difference। किस केस में ये ऑब्जर्व किया गया? ये ऑब्जर्व किया गया इन द केस ऑफ सेसी अमाल वर्सेस थायू अमाल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, the phrase file a PIL ostensibly in public interest but in fact to serve personal or private interests, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग फाइलिंग PIL फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओनली पब्लिक इंटरेस्ट? नो। फाइलिंग PIL फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरेस्ट? नो। प्राइवेट इंटरेस्ट का तो बात ही नहीं होती है। फाइलिंग PIL फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओनली प्राइवेट इंटरेस्ट। एंड ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑप्शन नंबर डी है फाइलिंग PIL alleging it to be in a public interest but actually seeking protection of private interest। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, फाइलिंग ऑफ फ्रिवलस PILs results in increasing backlog of cases, yes, wastage of resources, yes, lesser availability of time for hearing other genuine cases, yes। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, Z अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस अटेम्प्ट्स टू किल X। इज Z गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस? क्या Z ऑफेंस के लिए गिल्टी है? तो ये होगा पहला आंसर, नो, गिल्टी नहीं होगा। हैज़ X द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विच ही वुड इफ Z वर सेन? तो इसके सेकेंड वाले का आंसर हो जाएगा यस। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या कहता है? Z हैज़ नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस। तो पहला Z का नो है, तो नो, Z हैज़ नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस एज पर सेक्शन 98 ऑफ IPC एंड सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू X इफ Z इज मैड। तो यस है, तो यस, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 79 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, एडमिशन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू। एडमिशन किस में कैटेगराइज किया जा सकता है? जुडिशियल एडमिशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, सेक्शन 66 of Indian Evidence Act lays down a notice must be given before secondary evidence can be received under section 65A Indian Evidence Act, yes. Notice to produce a document must be in writing, yes. Order 11 Rule 15 of Civil Procedure Code prescribes the kind of notice to produce a document, yes। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, मैक्सिम रेस इप्सा लोक्यूटर मीन्स, इसका मीनिंग होता है द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। ऑप्शन नंबर ए, 82 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट एनी पर्सन हु, प्राइवेट पर्सन कब अरेस्ट कर सकता है? कमिट्स नॉन बेलेबल ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस। करेक्ट है, लेकिन पार्शियली करेक्ट है। कमिट्स नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
उसके प्रेजेंस में कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट करता है तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, हाउ लॉन्ग अ वारंट ऑफ अरेस्ट शैल रिमेन इन फोर्स। वारंट ऑफ अरेस्ट कब तक फोर्स में रहता है, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है कब तक रहता है, ये तब तक रहेगा जब तक कि एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा या इसे कैंसिल नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अंटिल एग्जीक्यूटेड और कैंसिल्ड। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 85, rate of additional depreciation will be what percent under section 32 Indian Income Tax Act। तो ये होगा 20%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, द कमिटी which led to the passing of the Criminal Law Amendment Act 2013 was headed by Justice J.S. Verma, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, अंडर द स्कीम ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होता है, ये प्राइवेट रॉन्ग्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, अ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अ मैन और अ वुमेन ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ व्हाट वुड बी वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 15 क्लॉज 1। ये हो जाएगा ऑन ग्राउंड्स ऑफ सेक्स। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अ मैन एंड वुमेन कह रहा है, तो ये साफ जाहिर है रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सेक्स हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, the objective resolution adopted by the Constituent Assembly on 22 January 1947 was drafted by whom? Jawaharlal Nehru, option number A. Next question number 90. Right to property was eliminated from the list of fundamental rights during the tenure of Morarji Desai, option number D. Next question number 91. When the accused states, I will produce the share which I gave received in such and such robbery, which of the following are not admissible with regard to section 25 Indian Evidence Act। not admissible वाले को ढूंढना है, कौन सा admissible नहीं है। तो an admission that there was a robbery, an admission that the accused took part in it, an admission that he got part of the robbery। तो 1 2 3 1 2 3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट बार काउंसिल। स्टेट बार काउंसिल का मैक्सिमम लिमिट कितना है मेंबर्स का, तो ये है 25, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 कंटेन्स। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कितने चैप्टर्स हैं एंड कितने सेक्शंस हैं, तो इसमें है 8 चैप्टर्स एंड 44 सेक्शंस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, व्हाट इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ सूट अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963? 12 months, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, कितना इम्प्रिजनमेंट पास करता है, नॉट एक्सीडिंग 7 years, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, अंडर सिविल प्रोसीजर कोड 1908 फॉरेन कोर्ट मीन्स, फॉरेन कोर्ट का मतलब कौन सा कोर्ट होता है, अ कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, सही है बट उतना सही नहीं है। नेक्स्ट, अ कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया एंड नॉट एस्टेब्लिश्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा मोस्ट अप्रोप्रिएट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, मिसयूज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ PILs मीन्स, मिसयूज करने का मतलब फाइलिंग PIL फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट इंटरेस्ट, करेक्ट है। फाइलिंग PIL फॉर ऑब्लिक मोटिव, ये भी करेक्ट है। फाइलिंग PIL ओनली फॉर पब्लिसिटी, ये भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट इज मीन्ड बाय प्रोसीजरल अल्ट्रा वायर्स। प्रोसीजरल अल्ट्रा वायर्स का मीनिंग क्या होता है, इट इज द नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ द प्रोसीजरल नॉर्म्स बाय द रूल मेकिंग ऑथोरिटी। It may make the rule ultra vires due to non-observance of rule-making authority and hence become void। तो आंसर हो जाएगा A and B, ऑप्शन नंबर डी, A and B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, द ग्राउंड ऑफ एरर ऑफ लॉ apparent on the face of the record is connected with which kind of writ। तो ये सर्ट्यूटरी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट क्वेश्चन। अंडर सिविल प्रोसीजर कोड फाइंड द इनकरेक्ट मैच, गलत मैच फाइंड करना है। सेक्शन 5 रेवेन्यू कोड ये सही मैच है। सेक्शन 7 प्रोविंशियल स्मॉल कॉसेस कोड ये भी सही है। ऑप्शन सी सेक्शन 9 पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स ये गलत है। तो हमारा गलती फाइंड करना है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था इस वीडियो में हमारा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 16th के क्वेश्चंस एंड उसके आंसर्स। आई होप वीडियो यूजफुल लगा होगा।